वेलकम एवरीवन टू अनदर लाइव स्ट्रीम। आज फिर से खेलूंगा KCD 2। ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा आज भी मैं। आज या शायद कल से भी छोटी ही करूं। करेंगे आज भी कुछ क्वेस्ट वगैरह एंड विल गेट बेटर इन गेम इवेंचुअली। Welcome guys to Kingdom Come Deliverance 2 once again. Let's continue our story. I'm in side quest. You silly doggy. पांडा, व्हाट इज दिस गेम अबाउट? पांडा भाई देखो, ये केसीडी जो है ये रियलिस्टिक फर्स्ट पर्सन गेम है। ग्राउंडेड काफी है। मतलब ये गेम वैसी ही सेट है कि मतलब ये रियलिज्म पे ज्यादा काम करती है रादर देन फैंटेसी या वो फैंटेस्टिकल या सुपरनैचुरल स्टफ, उन सब पे नहीं काम करती है। हिस्टोरिकल सेटिंग पर बेस्ड है 15th सेंचुरी में। इसकी फर्स्ट गेम KCD 1 मैं खेल चुका हूँ ऑलरेडी, और ये इसकी सीक्वल है जो मैं खेल रहा हूँ। What are you staring at? Fuck off before I flatten you. Let's just take it easy. I'm not looking for any trouble. A good thing, fool. You swine! Help me with this dog! I'll sort you out nicely! I've been waiting for you! Take that! See you shit! You're no match for me! ओके सेव। आई एम नॉट श्योर इफ देयर वर डॉग्स इन मिडीवल यूरोप। ये तो खैर अब मुझे भी नहीं पता। आई गेस होंगे यार। आई मीन डॉग्स तो क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट नॉर्मली करते ही हैं। बाय द वे, हैव यू एवर प्लेड चेस? यस, खेला है अफोर्ड। बट अब मुझे ज्यादा रूल्स याद नहीं उसके, लंबा टाइम हो गया चेस खेले। इस गेम में क्या है ना, तुम्हें सोना भी पड़ता है, खाना पीना भी पड़ता है सरवाइव करने के लिए। मतलब रियलिस्टिक सेटिंग है काफी। मतलब गेम तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम रियल लाइफ में के इंसान जैसे रहो काफी।
ऑफ कोर्स 100% नहीं है सब चीजें रियल, जैसे कि क्या बोलते हैं, तुम मर के जिंदा हो रहे हो, जो कि हर गेम में होता है वो सब। और तुम थोड़ा इन्वेंट्री में ज्यादा सामान कैरी कर सकते हो, वो तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा रियलिज्म से अलग है, बड़ा ओवरऑल गेम काफी ग्राउंडेड एंड रियलिस्टिक सेटिंग फॉलो करता है। I people kept pet dog mostly for work as we saw a dog assist the player in combat। हाँ तो वो थोड़ा अनरियलिस्टिक है वो चीज़। वो क्या है, गेम को थोड़ा इजी बनाने के लिए, या मतलब गेम में मतलब एक कंपेनियन वाला मैकेनिक टाइप है। रियल लाइफ में तो ऑब्वियसली कोई डॉग को नहीं रखेगा अपने साथ, इस मतलब उस टाइम में तो नहीं रखे भाई, क्योंकि डॉग रियल लाइफ में अगर एनिमी से लड़ने जाएगा ऐसी सिचुएशन में तो वो मारा जाएगा। आर्म सोल्जर उसे आराम से मार देंगे काट के, मतलब उसको तलवार से ही। लेकिन हमारे डॉग जो है ये स्टोरी का एक एसेंशियल पार्ट है, तो इसका एक प्लॉट आर्मर है बेसिकली, कि ये मरता नहीं है, इसको अगर पीट वीट दे कोई तो ये भाग जाता है बस, और फिर थोड़े टाइम में वापस आ जाता है हमारे पास। देखो गेम ग्राउंडेड एंड रियलिज्म को फॉलो करता है, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे एक गेम ही है वो। इट्स नॉट सपोज टू बी 100% ट्रू, इट इज आफ्टर ऑल अ फिक्शन, इवन आफ्टर being set in a grounded setting। Suck my cock. Why? You'll pay for that. Finish this quickly. Smash him on the head. Bleeding, are you? My God. Now people kept with themselves but for work, now not primarily for combat, but it was part of their life, so this is indeed realistic to kept a dog। हाँ गेम देखो का रियलिज्म को फॉलो करता है काफी, ये वाला। अगर आपको ये गेम खेलना है ना तो पहले मैं कहूँगा 1 खेलना, 1 बहुत अच्छा है, इसके बाद की स्टोरी है क्योंकि कंटिन्यू होती है। And this reminds me of another game called Kingdom of, I can't remember, plus it has those same mechanics, plus you can wed, have a wife, she would shout at you if you miss a single day with her। ये नाम मेरे को एक बार अगर मिल जाए ना आपको तो मेरे को बता देना कौन सा गेम है। किंगडम ऑफ, वो भी मिडीवल गेम है क्या, इसी की तरह? आर यू कैरिंग अ पैसेंजर और समथिंग? नो, मैं एक साइड मिशन करने जा रहा हूँ यहाँ पर।
अरे मेरा फास्ट ट्रैवल बहुत एरियाज में अनलॉक नहीं हुआ है। मेरे को, मैं पूरा मैप एक्सप्लोर करूंगा तब और ज्यादा अनलॉक होगा। इन लोगों ने नया फीचर डाला है फॉलो पाथ वाला। इसमें घोड़ा अपने आप ही रास्ते पे पहुंचा देता है, ये ऑटोमेटिक फीचर। बट यही है कि थोड़ा स्लो चलेगा। लो भाई, स्टैमिना खत्म कर दिया मैंने उसका। वो मेरे को गिरा दिया उसने लात मार के। द गेम आई वॉज टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड किंगडम कम डिलीवरेंस 2। तो भाई मैं जो गेम खेल रहा हूँ वही तो है। यू कैन वेड हैव अ वाइफ, शी शाउट आउट यू इफ यू मिस। भाई मैं भी, शादी कहाँ होती है इसमें? इसमें कहाँ शादी है? अपना कैरेक्टर है भी 18 साल का। आपने बोला था किंगडम ऑफ करके। मैं जो गेम खेल रहा हूँ वो है किंगडम कम डिलीवरेंस 2। बट भाई इस गेम को खेलने का कभी प्लान बने तो उससे पहले वही खेलना। वन के बाद अलग फील देगा क्योंकि स्टोरी कंटिन्यू है। Keep it up. यहाँ सेव मार देता गेम में जरा, ताकि दोबारा ना आना पड़े इतना वो करके। मैं apologize, I didn't see that and sure I saw a reel about this game where they talk about marriage। भाई देखो आगे हो सकता है उस स्टोरी में, लेकिन मैं अभी पहुंचा नहीं हूँ वहां पर, तो अवॉइड स्पॉयलर्स। एक्चुअली मैं बहुत आराम से खेल रहा हूँ भाई। आरपीजी गेम्स में बहुत टाइम लेके खेलता। He was fit as a fiddle. What? The Lord be with you. What do you need? Gamekeeper Vostatek from Takov sent me here. You were sent by Vostatek? Yes. He hired me to find and catch poachers in his forests. That job's done. So he sent me to you. He said there's something I could help you with. He was talking about some ghost? Nice. You might actually be useful then. What's your name? Henry. I'm Varro, the gamekeeper. Aha, you watched the trailer of Ark. Yes, I did. Excited for it. A while ago about this We'll play that game when it comes out. But I'll tell you about that after you help me with those bastards infesting my forests. भाई आरी गेम्स देखते हुए लोग एक्टर्स इतने अच्छे रखते हैं ना, सारे अच्छे दिखते। Aye. I just need to know some details. Sure. Ask away. Vostatek was moaning his forests are full of the vermin. But I only looked for 2. How many do you think you've got here? I have my suspicions about 3 places. The poachers always work alone. So I reckon it's an unholy trinity. How do you know you've got poachers here? The usual. There's been less and less game, and there's always a reason for that. I thought at first it might be them wolves that are rampaging there too, but I found some remains. It's a poacher, all right. How can you tell? There were knife cuts on the bones, not marks of wolves' fangs. Do you know of anyone near Slatigo who could help me? Try asking Ignatius, the Troskovitz gravedigger. Maybe he saw someone around there and can point you in the right direction. Good idea. Where do these bastards of yours usually hunt? The first one has been poaching Troskovitz, the graveyard site. Now we've started patrolling there, he's pulled back to Slatigo, somewhere to the east of the graveyard, and we ain't too keen to go there. Why's that? The place is cursed. And on top of that, it's swarming with wolves.
You know that half-built cottage in Slattergo? That must be deep in the forest, right? The previous gamekeeper started building it, but he didn't finish it. He kicked the bucket before he could go on his first round. I've been gamekeeper here since then, and I don't intend to end up like him. Right. I reckon that's all I need. Good luck. Okay. So let's I have seen many LARPers saying Ada is the one that married to Leon, but they always miss Claire at field because they generally are just LARPers and they always disappointing. भाई देखो एडा और लियोन का भले ही काफी बार वो लोग रिलेशन दिखाते हो, बट वो टॉक्सिक रिलेशन है, वो कहीं से भी मैरिज वाला रिलेशन नहीं है उनका। वो एक दूसरे के लिए वो दोनों फीलिंग रखते हो ना रखते हो, लेकिन मतलब रखते हैं, बट उनका रिलेशन वैसा नहीं है भाई लियोन और एडा का ट्रू लव वाला, नॉट इवन क्लोज। Quick! I really want clear X Leon, that would be adorable। पता नहीं भाई, कुछ लोग तो कह रहे थे शेरी के साथ उसका चक्कर चल रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि RE9 में लियोन के हाथ में भी रिंग है और शेरी मतलब लियोन के हाथ में वो रिंग होती है वो कॉस्ट्यूम अनलॉक वाले पे, और शेरी के हाथ में भी होती है इसलिए। लेकिन मुझे नहीं लगता सेंस बनेगा, मतलब दोनों के भले ही एज गैप ज़्यादा नहीं है, दोनों में एज गैप लाइक RE2 के टाइम लियोन 21 का था, शेरी 12 की थी, तो बच्चा हाँ एज गैप 9 साल का है, तो वो नॉर्मल ही गैप रहता है कई कंट्रीज में, लेकिन मेरे को फिर भी नहीं लगता उन दोनों का सही रहेगा, क्योंकि भाई बहुत ही अजीब रिलेशन लगेगा उनका। Someone just said son in the game by the way। हाँ इस गेम में भाई वो कैरेक्टर्स बोलते रहते हैं आपस में, और कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, मतलब जो सुनाई देते हैं लेकिन उनका सबटाइटल नहीं होता, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है नहीं है, ऐसे बस सुनाई देते हैं, वो एनपीसीज का रिएक्शन है अपने में बस। Great. Sherry is his daughter, almost his daughter, and this would be worst conclusion। देखो भाई मैं कह रहा हूँ उसके लिए बेटी भी मैं नहीं कहूँगा, 9 साल का डिफरेंस है मैं कहूँगा, लेकिन छोटी बहन टाइप है भाई। मतलब उसने शेरी को देखा था तो वो बच्ची थी भाई, और वो एडा को तब से पसंद करता है, तो मतलब वो किसी लड़की के साथ अगर एंड अप हुआ है तो कोई ऐसी होगी ना जो उम्र में मतलब एटलीस्ट उसके का थोड़े बराबर हो। I'm Henry. And you must be the local gravedigger, right? Ignatius, master of the sod, at your service. Looking for a final resting place, are you? Or do you need to bury a dead goat? Now, I'm more interested in the grave-digging profession as a whole. Ah, once you try it, you'll never want to do nothing else till the day you die. Being a gravedigger must be a lonely job, eh? What are your duties? Funny a young lad like you is so interested in grave digging. Not something you see every day. Well, I'm only asking. No real reason. That figures. Youngsters I could these only days wouldn't know well, hard work Claire if it bit 'em on Claire the सही है arse. फिर भी। It's no wonder I can't find any help. Are you Claire सही offering है me a भाई। job? No. I'm giving you a warning. You ain't cut out for this trade. And how do you know that? You've got that look. I can क्लियर ही spot it सही है a भाई, mile देखते हैं away. लोग शायद Could you be कंफर्म more कर ले आगे specific? जाके। You just aren't cut out for it, and that's that. A gravedigger needs passion. A sense of duty ain't enough. It's a service, a labor of love,
and the meaning of life all in one, lad. I'm not from these parts, and I've seen a few conciliation crosses around here. What do they mean? The same as where you come from, I reckon. They mark spots where the sins of man came to be regretted later. That's an interesting way of putting it. Aye, like when a fella buries an axe in someone's head over something stupid and then comes to regret it. Or if the law sees to it that he regrets it. The sinner then has to erect a conciliation cross to mark the site of his evil deed. Where does he get the cross from? Where do you think? From me. You're in charge of that too? Stone cutting? I know how to cut a cross out of stone. And what of it? With the soft sandstone around here, it's child's play. So they're all your work? I wish. I've only sold 2 or 3 recently. Most of these here are right old. You might find a few stories about them in the village chronicle what's kept at the rat house. All I know is a young fella once jumped off the cliffs near Takoff, and folks say the place is cursed. Do you know any more stories? Aye, I do, but I'm not telling you any. I'm not an old fishwife. What's the story with the dead people? The story? They're dead. What more is there to I'm like tell? really confused You here. said there's Did been a lot English of people content dying ain't in around here recently. medieval Right? Well, medieval it ain't times? usual for people to get off भाई by the देखो, carpet out here in the sticks, if you ask me. इन लोगों ने What do you reckon? पूरी कोशिश की Right. गेम medieval रखने की. I hadn't really thought about it लेकिन that way. That might be the तुम reason. एक चीज देखो, अपना जो कैरेक्टर है वो 18 ईयर ओल्ड है भाई. वो फर्स्ट गेम में भी 18 ईयर ओल्ड था और फर्स्ट गेम में वो एक पेजेंट था. बेसिकली उसको ना लड़ना आता था ना कुछ, लेकिन गेम में कुछ वीक्स और कुछ मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद एक तगड़ा नाइट बन गया. मतलब बेसिकली एक तगड़ा स्वॉर्ड्समैन बन गया. रियल लाइफ में तुम्हें स्वॉर्ड्समैन अगर बनना होता है तो तुम्हें सालों की ट्रेनिंग लगती है, सालों की, नॉट जस्ट फ्यू मंथ्स. और आफ्टर ऑल ये गेम जो है भाई है पुराने टाइम में ही सेट. लेकिन जो वॉइस एक्टर हायर इन लोगों ने करे हैं वो तो मॉडर्न ही है ना ऑब्वियसली. तो ऑफ कोर्स इंग्लिश वगैरह वैसी नहीं होगी. इसमें सब लोग पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करते हैं. उस जमाने में हर कोई नहीं था वैसा. आई मस्ट बी अनोइंग एपोलो. ना ना ना, आई मीन इट्स फाइन टू राइट आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, बट मतलब मैं थोड़ा मतलब रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उस हिसाब से. Hey? What? Look, I'm not suggesting anything. I'm just saying there's a lot of people dying. If things keep up like this, I'll be out of work in no time. There'll be no one left to bury. You got a big cemetery here. Pretty nice too. Ain't it? But being the gravedigger, I'll never have a place of my own here. They'll throw me by the wall like a dog and bury me without ceremony. But when I'm dead, I won't care. If it was up to me, I'd even bury the suicides in hallowed ground. We're all equal before death and the Lord. This game of better and worse places of final rest don't count for nothing. Have you been a gravedigger your whole life? Have you ever thought of changing your trade? I did think about it once, if I'm honest. I wanted to be a knacker in Yitchin. But some fool with friends in high places got the job, though he can't even tell a shovel from a spade. That really pissed me off, so I said, fuck it. Why would I want to dig graves for people who don't appreciate my craft? So you've always been here otherwise? And what of it? Do you think I get bored here? Not recently, I don't. But I think I told you that already. Okay, okay. So Aint wasn't coined in late 1600. It was populated in the 18th century. So I got my answer here. Okay, okay. Unfortunately, I had to bury both my parents recently. My condolences, lad. Thank you. I just don't know if it was done right. Did you witness their deaths? Unfortunately. They were killed in front of my eyes. I understand that's never easy. But if you closed their eyes and buried them in consecrated ground, you've nothing to worry about. I dug their grave next to our smithy. We didn't have a church in our village. Well, that can't be avoided sometimes. Don't let it bother you. As long as you picked the spot with good intentions, that's all that matters. I'm certain their souls went straight to heaven.
You needn't worry. You did everything right, lad. But seriously, Ignatius, tell me about yourself. Gravedigger, knacker, Snorter's constant companion, and lover of colourful sunsets, all in one man. You've nearly got more titles than the Emperor himself. Well, I have been doing it for almost 40 years now. The bailiff pays me well, in coin and sometimes in goods. Sounds appealing. Not all that glitters is gold, lad. A gravedigger's got it hard, and so does a knacker. I pick up dead animals on the side of the road. That's the knacker's job. You could say I have a knack for it. That's why people say I'm भाई untamed. 1600s If में I had children, they wouldn't be जिंदा allowed to रहना एक marry बहुत anyone होता besides an मेहनत का काम. executioner or a gravedigger. It's so ingrained in folk. A fella takes care of things they 1400, wouldn't want to 1600, handle 1500 ये themselves, सब में. and this is how they repay him. Can't even go to the tavern no Bro, more. this game looks so old. It's like from the 1500s. Yes, yes. I'm looking for a poacher in this area. Have you seen बहुत anything पुराना है suspicious? Stormy Sec. Not a poacher, I'm afraid, but more wolves than you can shake a stick at. It's mighty odd how many of them are wandering around here. I wouldn't be surprised if it was down to some sloppy poaching. Any idea where I should take a look? Right behind the cottage, there's a little path lined with boulders leading towards Slatigo. Follow it into the woods and take a look there. The Slatigo forest ain't that thick, so you won't get lost. It's nothing but rocks, really. Thanks. God be with you. Okay. बफर कर रहा है. चल गया. फिर बफर. फिर चल गया. And I recently saw a reply under a comment which was talking about Claire and Leon's possible marriage. The person replied, Chris must have said Leon marry my sister. She is still fertile. अरे एक मीम और तो बनता है क्रिस रेडफील्ड पे. रेडफील्ड ब्लड लाइन वाला. क्या आई वांट यू टू कंटिन्यू बाय ब्लड लाइन. वो भी तो मीम बनता है उसका. बहुत मीम बनते हैं भाई. क्रिस रेडफील्ड के ब्लड लाइन वाला मीम बहुत पॉपुलर है आरी कम्युनिटी में. If it isn't wrong, it's wrong. Yes! Hello Rex भाई, क्या हाल है? Welcome to the stream. क्या चल रहा है आजकल? आरी की बातें हो रही और एक्स भाई ना हो नहीं सकता. भाई कोड वेरोनिका की बातें चल रही थी. कैसा लग रहा गेम? यही बातें चल रही थी. और भाई वो एक मिनट में बफर कर रहा. हाँ ठीक हो गया. वो आरी 9 में लोग पता नहीं क्यों ये कह रहे कि लियोन ने शेरी से शादी कर ली. वो अंगूठी के चक्कर में. उसको फोटो देख के लोग कंक्लूजन निकाल ले, बट मुझे वो सेंस नहीं बनाता पर्सनली. Just stopped
एरिका किर्कस्टेयर। यार ये मेरे को मीम नहीं पता जो भी बताया। Quick! Whoa! Whoa! My Batman journey comes to an end. Arkham Origins Night Finish Absolute Games. Nice. अच्छा आपने आर्खम नाइट क्या बोलते किस मतलब मेन गेम ही एंड करा क्या आपने? वो सब रेडलर ट्रॉफी और पूरा गॉथम कंप्लीट कर दिया 100% मतलब? क्योंकि भाई मैंने तो नहीं किया था सब कुछ। वो रेडलर ट्रॉफी तो खास के मैं ना कर पाया हूँ। मेरे दोस्त ने कर लिया था बट उसमें बहुत टाइम लगता है वो सब करने में। बैटमैन जर्नी भाई बढ़िया रही होगी। मेरे को बस ओरिजिन्स खेलना है भाई, मेरी भी हो जाए पूरी फिर। यू नो एरिका कर्क, चार्ली कर्क वाइफ? नहीं मैं नहीं जानता, मैं जेनुअनली नहीं जानता। मैं इनफैक्ट चार्ली कर्क को भी नहीं जानता था भाई जब तक वो मेरे को न्यू खबर नहीं मिली थी असैसिनेशन वाली। एक सेकंड मेरे को कंफर्म करना, वही थी ना? ये मैं गलत गलत समझ लूँ? हाँ वही थी वही थी। द कर्क हु स्टार्टेड द कर्किफिकेशन। नहीं ये सब नहीं पता मुझे। मैं ज़्यादा बाहर की दुनिया का नहीं रखता नॉलेज। मेरे को पता है, चल पता सब पहले पता कैसे चला था। वो घोस्ट ऑफ योटे के डेवलपर्स है ना, उनमें से कई लोग हंस रहे थे उसकी डेथ पे। तो वहां से मुझे पता चला था और उन्हें फिर बाहर निकाला गया था डेवलपमेंट टीम से, ऐसा कुछ सुना था मैंने। 100% नहीं, वो नाइटफॉल प्रोटोकॉल की ट्राई कर रहा क्योंकि गेम में फन आ रहा, बहुत ग्राइंड था। सो आई वॉच्ड इट, एंडिंग थोड़ी क्लाइमेटिक लगी मेरे को, थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस रखना चाहिए। भाई एंडिंग वगैरह सही थी, बस वो यार वो रिडलर की ट्रॉफीज अनोइंग थी यार। अगर वो ना होती तो मैं पूरा कर देता गेम फिर। अब बैट मोबाइल में वैसे ही मेरे आर्खम नाइट भाई देखो कॉम्बैट वाइज बहुत ही अच्छा गेम है, बट बिकॉज ऑफ बैट मोबाइल का यूज ना मुझे मेरी वो लीस्ट फेवरेट गेम है आर्खम सीरीज में। फॉर ओरिजिन 7/10, नाइट के लिए 8.5 ओनली बिकॉज ऑफ बैट मोबाइल ओवर यूज एंड स्टोरी। हाँ बैट मोबाइल को ओवर यूज बहुत किया उन्होंने। आई वॉन्ट टू प्ले एज बैटमैन नॉट एज बैट मोबाइल। बोला गूगल मारना पड़ेगा भाई। केसीडी थोड़ा भाई एक्सपेक्ट करता है ना कि तुम थोड़ा ग्राउंडेड वे में तुम खुद से मतलब वो तुम्हें जगह बता देगा, ये पूरा सर्कल दे दिया गेम ने, अब वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं ढूंढूं इसको खुद। बट भाई मैन अल्लाह मैं मेरे को पसंद है वो सोनी वाली गेम्स भाई, जो कि पूरा एक एक कोना कोने कोने की लोकेशन डाल के रखती है, यहाँ पे मिलेगा सामान। गूगल इमेजेस पे जाओ, वहाँ मार्क्ड होगा। हाय लियोन, क्या हाल है? रिडला ट्रॉफी जरूरी नहीं उसमें, बाकी कोई साइड मिशन कर लो उससे, वही वही वो सब बढ़िया। बट हैव टू से स्पॉइलर, जिन्होंने गेम ना खेली रीड ना करे, वाइट जिन्होंने गेम ना खेली रीड ना करें, वाइट बैट मोबाइल इज लव। ये ऐसा क्या? कैसे हो? मस्त फ्री टाइम नहीं मिलता ज़्यादा, मोस्टली खुद की गेमिंग होती है। यस मैं यार थोड़ा ये देख रहा क्या है यार, मेरे को लोकेशन नहीं मिल रही इसकी। मेरे से खुद से नहीं वो मिलेगा भाई, बहुत बड़ा ये जंगल वंगल इतना बड़ा दे देते हैं ना, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं मैं ढूंढूं, वो नहीं होता मुझसे। मैं एक वाईटी वीडियो खोल के देख लेता, वहाँ वो अच्छे से लोकेशन दिखाएगा।
अरे लॉल भाई, बंदे बंदे ने वीडियो ही नहीं डाली ढंग की, मैं खुद ही करता। इसका मैप बहुत बड़ा है भाई। अभी ये जो रीजन देख रहे हो ना तुम, ये पूरा, ये ऊपर से लेके नीचे तक जितना देख रहे हो ना, ये अभी पूरा मैप है भी नहीं इस गेम का। ये ट्रॉस्की नाम का रीजन है। अभी गेम की जब स्टोरी और आगे बढ़ेगी तो एक और मैप खुलेगा, उसका नाम है कुटेनबर्ग। ऑल्सो डाउनलोडेड 007 माखी चूस $30 मांगेंगे भिखारी देश की क्रैकिंग जिंदाबाद। ये बात। हाँ तो मैं ये कह रहा था, अभी इसका मैप डबल डबल साइज है भाई पूरा। KCD 1 से बहुत बड़ा मैप है। अभी नया रीजन भी खुलेगा मेरा स्टोरी में, तब मेरे को और वो मिलेगा। भाई एक तो भांग भोसड़ा गेम खत्म कर दी डिलीट करने की जगह। कौन सी गेम? ऐसा क्या कबाड़ा खेल लिया? बहुत बड़ा। दैट्स व्हाट शी सेड, दैट्स व्हाट एडा सेड। ना बाहर आ गया सर्कल के। थोड़ी सी खेली, ठीक ठाक लग रही फिलहाल। हिटमैन वाइब है बहुत, देखना। इट इज़ यूनिक। मेरी मेन एक्साइटमेंट जॉन विक गेम्स से है। CEO, हाँ, जॉन विक की गेम का वेट है मुझे भी, वो तगड़ी होगी। मैं यूट्यूब पे देख लेता यार, गूगल ने अच्छे से आंसर नहीं दिया मुझे। मैं खुद नहीं ढूंढ पाऊंगा भाई, बहुत बड़ा जंगल है। इन द फॉरेस्ट, बस ढंग की गाइड मिल जाए। इसके अकॉर्डिंग तो इधर तरफ ही है। ठीक है, लेट मी चेक दैट आउट। पायरेट केस में की है PS। अरे PS5 में कहाँ करेगा? व्यू फाइंडर लाइक मतलब डिस्को एलिजियम टाइप है। नॉट बैड गेम, व्हाट यू नो व्हाट आई मीन। इट इज़ अ पजल प्लेटफॉर्म बट क्रेजी मैकेनिक्स एंड FPS। ओके। कैपों के लिए प्यार है। ग्रेस, एडा, जिल, रेबेका, जेसिका, क्लेयर, आई एम इन वेरोनिका रीमेक। उसको वैसे भूल गए। RE6 वाली वो भी तो थी एक, हेलेन, वो भी अच्छी दिखती थी भाई। हिटमैन का वो खलीफा वाला मिशन जो कि गेम फेस्ट में अनाउंस हुआ तो वो भी पूरा कर दिया। कैसा है? स्टार ब्लेड 2 इनकमिंग एंड वेस्ट के छक्कों ने बहाने ढूंढ लिए ने। अरे बस स्टार ब्लेड 2 में तो वो माइनर है भाई, नहीं बोल सकता कुछ। कैपकॉम तो कुक कर रहा। RE9 प्रैग्माटा, आरी वेरोनिका, ओनीमूशा भी आ रही इनकी। मैंने उसका डेमो खेल लिया, बट थोड़ा मैं इतना एक्साइटेड हूँ नहीं। मतलब वैसे टाइप की गेम, मतलब शॉर्ट फाइटिंग, मतलब काफ़ी गेम्स में इधर उधर देखा ही है मैंने, एक्सपीरियंस भी कर रखा है। मैन गिव मी द फकिंग कैम। मेरे पास एक आइडिया है। ये कुत्ता ढूंढ सकता है ना शायद, तो वही तो नहीं। नहीं, पत्थर है। Here, Matt. Search. भाई कैंप ढूंढ निकाल भाई। जेल एंड केयर एब्सोल्यूट बैडीज इन द एंटायर फ्रेंचाइज रॉक साइड रेबेका। बेकार है, बहुत छोटा, और मैं तो और भी छोटा कर देता हूँ। लॉन्ड्री अगर हैक एंड स्लैश हुई तो लूंगा, वरना अपने गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस के खिलाफ कोई और नहीं चलेगा। मैंने तो पोस्ट डाल दी ऑलरेडी भाई। Come here. कह दिया भाई, मैं नहीं खेल, मेरे मतलब इंटरेस्ट थोड़ा कम है मेरा। मैं खेल लूंगा, मैं, मुझे दिक्कत नहीं खेलने में। बट यार गॉड ऑफ वॉर जो नाम है ना, वो क्रेटोस के लिए ही बना है वो।
वो नाम क्रेटोस का टाइटल है वो। गॉड ऑफ वॉर इज अबाउट क्रेटोस। लोफी का नाम कुछ और रख देते तो समझ आता। गॉड ऑफ वॉर, वो क्रेटोस इज गॉड ऑफ वॉर। वही लोगों के मिक्स्ड रिव्यूज हैं यार। इस पे यूट्यूब गाइड वाले अच्छी सी वीडियो नहीं बनाते यार। मेरे को पूरा जंगल घूम घूम के थक जाऊंगा। भाई मेरे को उम्मीद थी यार शायद मिल जाए। लॉल। लाइक एक बॉक्सिंग मैच है, उसमें विज खलीफा की फाइट है हमारे क्लाइंट से, उसको बोरिंग मैच में जान से मार देते हैं हम। लेकिन मैंने दिखने में माइनर डजेंट बीन एक्चुअल में माइनर। इवन इंडिया में ऐसे नॉर्मल है, दो 22-30 साल वाली 16-17 की निकलती बॉक्सिंग में। हाँ ये भी बात है, लेकिन नहीं, लोग कह रहे कि वो सच में माइनर है। मैं एक बार फिर से देखता हूँ। एक और गाइड खोलता। यार एक गाइड नहीं मिल रही अच्छी सी यार, क्यों? फक मैन, दैट्स नॉट फेयर। भाई मेरे को बिना गाइड के ही करना पड़ेगा। यूट्यूब पे कोई गाइड नहीं है, ना गूगल पे। मार्क तक नहीं किया भाई किसी ने अच्छे से। An entire aircraft carrier with the fleet, fleet and spaceship from Star Wars when Alexander was invading Persia। ऐसा क्यों? डक से उड़ाकर 40 सेकंड में मिशन खत्म कर दिया। अरे वाह। सॉल डिफीट अलेक्जेंडर एंड एसेंड टू माई गॉडहुड। ये मिस्टर बीस के 500 मिलियन सब्स और आपके 500 सब्स पे क्या कमेंट है? मिस्टर बीस्ट है, मैं मिस्टर भोसड़ा हूँ। सोचा 007 के साथ एसी ब्रदरहुड रिप्ले मारू फॉर सम स्टेल्थ एंड आल्सो प्लेइंग 007 और हार्ड स्टेल्थ गेम। हार्ड पर खेलने थोड़ी फील आती है। हाँ कर वैसे 007 सच बताऊँ स्टेल्थ गेम नहीं है भाई, वो एक्शन गेम ज़्यादा है। इट इज़ मोर ऑफ अ एक्शन गेम लाइक अनचार्टेड। स्टेल्थ मैकेनिक्स उतने नहीं है उसमें। मतलब स्टेल्थ कर सकते हो लेकिन स्टेल्थ उतना मुझे दिखा नहीं उस गेम में। वो स्टेल्थ हिटमैन में तो स्टेल्थ करना ही पड़ता है उसको पार करने के लिए। ये गेम में मतलब तुम ओपन कॉम्बैट करके ख़त्म कर सकते हो, वैसे बनाया डेव्स ने। यार बफर कर रहा है यार, मैं इधर मुझे ये भी नहीं मिल रहा है, उधर बफर भी कर रहा है। मैं दोनों तरफ से क्या करूं? मैं ना हेट दीज यूट्यूबर जो गाइड नहीं बनाते अच्छे से। That must be the unfinished cottage Varel was talking ओके about. ओके ओके, आई गॉट समथिंग। बोल तो यही रहा था ये। दैट मस्ट बी दी अनफिनिश्ड कॉटेज। Here, Matt. Search.
मैंने सुना हिटमैन वालों ने बनाई है, सिमिलर होगी, थोड़ा स्टेल्थ में मजा आता है, स्पेशली हिटमैन ऐसी गेम है जिनमें स्टेल्थ है, नॉर्मल कॉम्बैट। अब उसमें हिटमैन में नॉर्मल कॉम्बैट के टाइम मौत जल्दी आएगी, इसमें नहीं आती। ये नॉर्मल कॉम्बैट वाला गेम नहीं है ये ना। ओके 007, सॉरी, ये स्टेल्थ वाला गेम नहीं है, मैं उल्टा बोल दिया। रुको अभी। हाँ, बाकी ये बताओ, रियलिज्म वाली बकलूली कैसी है? सही है, काफी काफी ज्यादा ग्राउंडेड ग्राउंडेड गेम है। बट ये भी देख रहे हो ना, पनिशमेंट क्या है ये। अब तुम सोनी के गेम खेलते हो या कोई भी गेम खेलते हो ना, 99% गेम वो तुम्हें लोकेशन दे देते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्ट मुझे इधर एग्जैक्ट आना और मुझे मेरा रास्ता मिल जाएगा। अब गेम ने मुझे हिंट दिया कि कॉटेज करके कुछ वर्ड था, मतलब मुझे इसी एरिया में कहीं मिलेगा इस पूरे सर्कल में, मुझे अब ये ढूंढना है खुद। ये पनिशमेंट है रियलिज्म वाली, कि आपको टाइम और पेशेंस ज़्यादा देना पड़ता। और मैं फिर यूट्यूब गाइड गाइड ढूंढता हूँ, और लेकिन गाइड कोई अच्छी चाहिए मुझे। डिड यू वॉच द, नहीं मैं बॉयज आज तक नहीं देखा, एक भी एपिसोड नहीं। द पैंडा से डिफीट बाय द ग्रेट अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड brought by the god carrier, I would say panda might by the fellowship flow of the mostly folly witchcraft kudos the। अबे क्या लिख रहा है यार, मेरा दिमाग खराब। यार बफर कर रही, यू आर यूजिंग चैट जीपीटी, वो कर रहा होगा यार, बफर कर रही बहुत ज्यादा यार, मेरे को ये भी नहीं मिल रहा, बफर कर रहे हैं। नेट गया क्या मेरा? चल रहा है, ठीक है भाई, स्ट्रीम की क्वालिटी लो ही रखूंगा फ़ोन पे, वरना बफर बहुत करेगा यार। मैं गाइड के बिना नहीं कर सकता है मिशन भाई, आई एम सॉरी टू से। एक भाई बस यूट्यूब पे एक अच्छी गाइड दे दो कोई, प्लीज़ भाई, एक मार्कर लगा के गाइड दे दो अच्छी वाली, इतनी घटिया गाइड मत दिया करो। एक तो अंधेरा भी हो गया है ना गेम में, तो मुझे और नहीं दिख रहा है कुछ। मेरे को अंधेरा होने की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है, मेन प्रॉब्लम ये है। विचर 3 को पॉज दे दिया फिर से, अब तो डीएलसी के बाद ही खेलूंगा। न्यू एंडिंग क्योंकि सीडी प्रोजेक्ट वालों का एंडिंग डालने की आदत है विद डीएलसी। मिस द पीक टू बी ऑनेस्ट। क्या पीक भाई, बॉयज की बात कर रहे? उसके बाद विचर 4 में मिल्क सीडी के साथ खेलो। यस, मैं नहीं पढ़ा रहा भाई तुम्हारी चैट, ये क्या लिख रहे हो ये? मेरा मेरा भी फोकस इधर है भाई, मैं भी ऐसी चैट नहीं पढ़ूंगा जिसमें जिसको पढ़ के मजा ना आए। मेरा भी फोकस इधर गेम तरफ है। एक अच्छी गाइड नहीं मिली यार, पूरा मैं मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो ये बफर और दे रहा है भाई, क्यों यार? Alexander can never defeat me. I can shock him with more wisdom than Diogenes. अरे बफर कर रही है क्या स्ट्रीम तुम लोग के? मुझे ये बताओ जरा, मेरे में बहुत ज़्यादा कर रही है। ऐसे क्या, जैसे कि मैं स्ट्रीम करके पाप कर दिया हो यार। कहाँ फोकस करूँ भाई, वो गेम में वो लोकेशन नहीं मिल रही है, इधर स्ट्रीम बफर हो रही है, मैं क्या करूँ? शट द फक अप। How about a big cup of shit dive? भाई ये चीज जो है ना इस गेम की, क्या लोकेशन ना देना, ये बहुत क्लियर क्लियर
पसंदीदा भी है, बट बहुत प्लेयर्स को बहुत अनॉय भी करती है। मेरे को पर्सनली करती है, क्योंकि मैं बहुत वो नहीं हूँ भाई। मेरे को गंदी आदत है हैंड होल्ड होने की। आई कांट लिव विदाउट भाई समवन गिविंग मी ऑर्डर। आई एम मोर ऑफ अ सोल्जर देन अ कमांडर। अरे यार मिल जाए यार, ये कुत्ता भी नहीं ढूंढ सकता शायद, ये पूरी बात है। ये ढूंढ पाता ना तो अच्छा रहता है एटलीस्ट। मेरे को इस चीज का दुख है, ये नहीं ढूंढ सकता। टाइम क्या, रात हो रही है। फिर बफर कर गई स्ट्रीम। मैं काम करता हूँ, दिन में आता हूँ। इट बफर्ड अलो बिफर्ड बट नॉट राइट नाउ। भाई मेरे में तो अभी भी कर रहा है। मैं काम करता हूँ, दिन में आता हूँ भाई इधर। मेरे को रात के टाइम कुछ दिखाई नहीं देगा भाई, बहुत अंधेरा है। मैं दिन में आऊंगा इधर। अभी के लिए काम करता हूँ, सो जाता हूँ कहीं जाके। गया गेट नेट ही गया भाई ले। अरे फक यू भाई, ये मत कर। हाँ कनेक्ट हो कर तो रही वैसे। ही इज यूजिंग द वर्ड विच इज शेक्सपियर इंग्लिश, आई एम यूजिंग, शी इज यूजिंग मिडीवल इंग्लिश। भाई मेरे को तो कुछ नहीं पता है क्या है ये सब भाई। मेरे को यार मिल नहीं रहा है। मैन somebody हेल्प मी। कोई ना, लेट्स किल ढूंढ लेंगे भाई। बहुत देर से इधर ही घूम रहा हूँ। भाई रात के अंधेरे में ना गेम सच में बहुत वो हो जाता है डार्क, जेन्युइनली। रो हंटिंग स्पॉट है तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ चैट। कैन आई कम इन? यस भाई का बताओ यार का जरा, अगर कुछ लोकेशन पता हो मेरे को, एग्जैक्ट लोकेशन बता दो भाई, कहाँ कहाँ पर है वो। भाई अंधेरे में ना और नहीं दिख रही क्योंकि चीजें मुझे, अंधेरे के टाइम और दिक्कत आती है। यू आर नॉट टफ। मिल गया। अरे बहन से कौन मार रहा है? मेरे को पता भी नहीं उसको लग रही है कि नहीं।
हो गया? कितने वुल्फ्स हैं भाई? से I wanna tell you about my feeling, gonna make you understand, never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around your desert. अरे तो वो है ना रिकरोल। टाइम लगा लेकिन मिल गई भाई लोकेशन भाई साहब। तो गांड मार देते हैं लोकेशन के नाम पे। एनीवेज बोलो। आई थिंक अब मेरे को जाना है उस पे। अरे व्हाट द फक, मैं अपनी वीडियो खोल रहा मैप समझ के। एक वीडियो और देखी थी ना। चलने दे भाई, ऐड चलने दे। यस लेट्स गो मैन। मैं नहीं पढ़ रहा भाई वो संस्कृत जो भी लिखा है। कल से सोच रहा अपनी स्टीम की लाइब्रेरी में इंडी गेम्स खेलूं सारी। लाइक कुछ 390 गेम होंगे अनप्लेड, अगर वो सब स्पीड रन मारूंगा देखता हूँ कितनी नहीं होंगी सारी खत्म। नो वे, दैट ain't gonna happen. Looks like the poacher was attacked by wolves in his hideout. He tried to flee. They chased him down. Oh well. I'd better report it to the gamekeeper. Maybe I should get hold of some evidence. Might there be something on the dead body? ओके उसको बताना है अब जाके, क्योंकि उसने बोला था कि माइट देयर बी समथिंग ऑन द डेड बॉडी। तो वेयर इज द डेड बॉडी? God, where is that dog? आधी गेम ट्रोल है, लाइक
फक हिटलर फक स्टालिन। अब ये कौन सी गेम खेल रहा है? भाई हिंदी और संस्कृत कुछ भी ना लिखे, मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है। हिंदी में बोलने में अच्छा हूँ लेकिन मैं पढ़ने में बहुत खराब हूँ। अंग्रेजी Feel बोली quite नहीं जाती, hungry. हिंदी पढ़नी नहीं आती। सिंपल बात, नो बकवास। Whoa, whoa. एक सेव बना देता है इधर। ब्रो रेटियो बूम बूम किन ऑफ बुसिन टू लिल टेक नॉट गॉन लाइक। सर्च करो, बहुत बढ़िया गेम है। ये तुमने जो लिखा है गेम का नाम है? Greetings. What do you want? I've got news about that poacher that you sent me to catch. And? Did you catch him? Not exactly. What does that mean? Well, you know how you said this poacher leaves a mess behind? I know the weasel. That really makes my blood boil. Anyway, that's how the wolves sniffed him out. He didn't stand a chance against them. There wasn't much left of him, but I brought at least this as proof. Show me. A hunting knife. This knife will be no use to him now. But still, no one deserves such a fate. Getting ripped to pieces by wolves. Oh. Never mind. I'm not going to grieve over him. You said something Danger about a ahead. ghost. Will you tell me what that's all about? Hold your horses. All in good time. If you help with another poacher, I'll tell you the whole story about the ghost. Or are you tired of walking through our beautiful forests? It's starting to get a bit repetitive. Look, I'm not too chuffed about it either. But like God made Adam and Eve, he also made poachers and Varel. What can you do? इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हिंदी पढ़ी नहीं जाती, तो कृपया व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिखें। ये मैसेज पिन करो। ये लो, अभी कर देता पिन। मैंने वैसे ऐसा टाइप का तुम्हारा कमेंट पिन तो किया था अपने धुरंधर वाले रिव्यू में। There's a lot of poachers on the rampage here, aren't there? Is there anything different about this one? This poacher is operating on a big scale. A big scale? He's killing so much game that he must be selling it somewhere. It's much more than he could use himself. Only, to prove anything, I'd have to grill all the innkeepers in the area. They wouldn't tell me anything anyway. What should I do with him? Arrest him and take him to Troskovitz? If some wild beast doesn't mete out justice first, aye. If he's not willing, force him. But make sure he's not too battered. Yeah, I understand. Where does this one hunt? Any idea where I should go looking? A stone's throw from here, in the woods around Samine Pond. Christ, it's right here under your nose. I don't like going into them forests, to tell the truth. Even though they're nice and close, there's something not right about them. The game is often frightened. He uses that to his advantage. Maybe Miller Crazel knows something. The poacher operates near his mill, after all. Good idea. I'll ask him. Thanks. I'll go and find him. Good luck. Can I spend the night here? Just the one night's enough. All I need is to spend the night. For a few groschen, you can sleep on the hay. Let's agree on a price.
Satisfied? You really won't... Agreed. There's plenty of room on the head. Where should I lie down? It'll be best to sleep in the attic of our hunting lodge. Would it be possible to sleep here sometimes? Well, I don't know. But if you offer a good price, I reckon you can. भाई कोई तो इंडियन गेम है, अप्पा करके, बढ़िया सी ट्रेलर देख कर आता जरा। हाँ देख लो, मैं भी, मेरे को बताना कैसा है, फिर मैं भी देखता। आई एम ऑल्सो गोइंग बैक टू माई वाइफ नाउ, शी मस्ट बी मिसिंग मी। कौन है भाई, नाम तो बताओ। कौन सी फिक्शनल कैरेक्टर वाइफ को वाइफ बना दिए? OMG, this game actually looks like GOTY nominee. What the fuck? Thanks to Janitor AI, I have a wife now. अरे बहन की आँख AI से। Greetings, what do you need? What do you have for sale? I'd like to discuss the price. Well, I suppose we can try. Do you accept? You won't cut. Aye, that'll do. I'm feeling a bit peckish. Greetings to you. It's like story plus Balatro 2D plus choices plus all human made। क्या है भाई, थोड़ा बताओ तो सही। फक मैन, इतना बड़ा जंगल। Damn, see trailer, it looks good। मेरे को DM करो जरा, DM करो।
ओके आई विल चेक द ट्रेलर. इट वाज नॉमिनेटेड फॉर गोटी दो. कौन ये जो जिस गेम की बात कर रहा है स्टॉमी? I'll get you. Easy! I've been attacked! Help! Mercy! I surrender. Fight! I'll beat you to a bloody pulp, fucker! Too slow! I've been waiting for you! मार अंडे क्या तेरी? Hey, fuck that! You son of a bitch! Useless! हट साला. ये तो अभी रिलीज ही नहीं हुई. व्हाट? एक्सक्यूज मी सर, व्हाट डिड यू जस्ट से? मैंने बोला कि कौन सी गेम कह रहे हो? इट वाज वो एक गेम बता रहा है, आप कह रहे हो कि इट वाज नॉमिनेटेड. तो इट से क्या मतलब है? इसका आंसर दो पहले. मैं कंफ्यूज हूँ मैं. देखा? अभी नहीं देखा. मैं स्ट्रीम के बाद ही देखूंगा, आराम से एकदम चिल होके. देखा ट्रेलर? नहीं देखा. मैं स्ट्रीम के बाद देखूंगा. मैं तुमने लिंक दे दिया है ना. अब मैंने लिंक पता है क्यों मांगी तुमसे? ताकि मैं ट्रेलर देख सकूं. तुमने जो गेम बता रहे हो वो मेरे को ऐसे ऐसे समझ नहीं आएगा. याद नहीं रख पाऊंगा बाद में. इसलिए मैंने तुमसे लिंक ले ली. It KCD which you are currently playing. I was talking about, you said something about his mom. किसकी मम्मी? किसकी मम्मी? समझा नहीं. जस्ट फॉर द रेज बेट दे रखा ट्रेलर. व्हाट डिड यू से? वो अच्छा, मैं एनिमी को माँ की गाली दे रहा था उसकी बात कर रहे हो? ओके समझ गया. वो मेरा नॉर्मल है. वो मैं हर गेम में देता हूँ एनिमीज पे. वो मेरा नॉर्मल है. वो मैं आप मेरी स्ट्रीम पे लंबे टाइम बहुत लेट अब रेगुलर नहीं आते ना, पहले की तरह नहीं रहा अब. मैं वो गरिया देता भाई गेम कैरेक्टर्स पे. इसकी माँ की ऐसी तैसी मैं सीधे बोल देता भाई. Gamekeeper Varrel told me there's a poacher in the forest near the pond. Know anything about him? I'm trying to track him down. And I thought, since it's your neck of the woods... All there is in Lower Samine Forest is the lair, my storehouse. It's on the south side of the pond, somewhere near the middle of the woods. Don't snoop around there too much. But if there's some poacher working there, it must be even further south from the lair, somewhere on the hill there. Thanks. I'll search deeper in the forest. Take care.
What's the purpose of the pen beyond the stream? You noticed the bloodstains there, eh? I let my hands practice fist fighting there. And what's in it for them? I send the strongest one to Zhedioff once in a while, to test his mettle against the locals. So, maybe you'd like to fight a bit too. And can I try too? Why not? Maybe you'll get to go to Zhedioff. Of course. Winning some coin would be nice. There you go, then. If you're good, maybe I'll even pay the entry fee for you. Take care. Okay, I will try that mission. I miss that lady ghost though. कौन सी lady ghost? इसमें कोई मेजर कैरेक्टर मरता है? मुझे नहीं पता भाई, और स्पॉइल मत करना. Am I cheating on my match if I miss that ghost lady? No. भाई एल्डन वाली स्ट्रीम में तो गालियाँ इन्वेंट करी थी आपने. ना 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 ना, मैं बहुत पहले से देता आ रहा हूँ. एल्डन वॉज न्यू. सेकिरो में भी मैंने दी थी. मेरी ऊंचाई की तुमने स्ट्रीम नहीं देखी? मैंने तो कंट्रोलर तोड़ दिया था अपने स्ट्रीम पे. मेरी उस एक स्ट्रीम में मैं आपका कंट्रोलर तोड़ दिया था भाई. वो कंट्रोलर वैसे भी खराब था, वो यूज भी नहीं कर रहा था, वो साइड में रखा था बस. Are you talking to me? Who else? Gutenberg, Hangman's Halter? You really don't remember? Back already, Hans? I thought you'd be gone a lot longer. Do we know each other? Of course. It's me, Joachim. We met in Gutenberg. We had that row about who had the right to a better pitch at the market. We nearly crossed swords at the cattle market in the morning. But come evening, we were getting boozed up together at the Hangman's Halter. You more than me, I reckon, seeing as you don't remember. I'm not Hans. I'm Henry. Yeah, right, Hans. And I'm King Sigismund. Where is it exactly I'm supposed to be coming back from? You said you were off to Germany to sell your wares. I gave you some trinkets to see if you have any luck hawking them for me there. Didn't you go in the end? You're a trader, then? Not quite, Hans. Just a plain old huckster. मेरा लगता है फरहान से मिल चुका है. What is your mission in the story brother and what's your main objective? तो एक हम लोग को शादी में जाना है, बट वहाँ के हमें एंट्री नहीं है. एक्चुअली देखो हिस्टोरिकल चीज़ है. हम लोग क्या है, किंग वेंसेलस की तरफ हैं, और वो किंग सिगसमंड के अंडर जो एक आदमी आता है, हम लोग उसको एक लेटर देने जा रहे थे KCD 1 की एंडिंग में. और वो लेटर जो था बेसिकली वो ये था कि हम उस आदमी को अपनी तरफ कर दें. तो हम लोग बेसिकली उससे मिलना चाहते हैं. और नेक्स्ट जो तरीका है उससे मिलने का वो एक वेडिंग है जो कि उसके रिलेटेड किसी की है, और उसमें वो आएगा. तो हमारा मेन मिशन तो यही है कि वेडिंग पे जाना है. लेकिन मैं आराम से मेन मिशन करता हूँ. टू कैच मिडन मतलब इन्वेंट मतलब न्यू गालियाँ बनाई थी. कौन सी? जर्मनी. आई डोंट थिंक दैट वाज द लोकेशन बैक देन. Where do you get the goods you sell in Kuttenberg? Wherever I can, Hans. Wherever I can. Every now and then I meet a merchant on the road who's happy to trade with me. Other times I bump into a craftsman in some backwater who makes quality stuff that doesn't cost the earth. So I peddle my wares around the country. How's business? It's been better. Luckily, there are still enough people in Gutenberg who aren't living hand to mouth, but they still chafe at the prices, even though I haven't put them up in years. I'm curious to see your wares. Wares? Trinkets and baubles, more like. But something might catch. भाई जर्मनी से मुझे एक चीज़ याद आई. मैंने जर्मन शो देखा था इस साल शुरुआत में, डार्क नाम से, बहुत तगड़ा था. सेफ.
जर्मनी में गुटेनबर्ग आता है जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई थी। यार भाई मेरी ज्योग्राफिकल नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है। मेरे को इतना पता है इस गेम में जो लोकेशंस है ना वो मतलब रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। इस गेम कुछ कुछ मैंने सुना था कि कुछ कुछ कंट्रीज में लाइक स्कूल वगैरह में ना हिस्ट्री पढ़ाते वक्त केसीडी गेम के स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए थे। वुड कटर है। Camp here, but it looks like a bandit's camp. If you value your life, Right, I'm going. next time won't end well. Clear off! You again? That's enough. You're getting a thrashing. Enough! I give up. Let me live! Give me everything you have, and I'll let you go. All right, easy now. Just let me go, and I'll give you everything. ले तो मर गया। बट आई वॉज टॉकिंग अबाउट जर्मनी इटसेल्फ। आई डोंट थिंक इवन अ स्टेट नेम्ड जर्मनी। अरे रुको यार मेरा बफर कर रहा है स्ट्रीम। लेट मी। हाँ आई वॉज टॉकिंग अबाउट जर्मनी इटसेल्फ। I don't think even a state was named Germany, and there was no country named India. I know Gutenberg existed, Berlin, Frankfurt, all existed back then, but not Germany as a country or anything like that. Pragraj existed, Delhi existed, but not India. India was either called Indica or Aryavarta. India is just an English version of Indica, which is Greek name for land after Indus River. India is a nation and Germany is a country. That is the difference. Shut your fuck up, shut your bitches up. अरे तुम लोग का बफर कर रहा है क्या? एक बार मेरे को बताना जरा। अगर कर रहा है तो मेरे को बहुत बफर कर रहा है क्योंकि नॉन स्टॉप बफर कर रहा है। नॉय कर रहा बहुत। चल गई। Man, why the fuck it buffers, man? Why the fuck it buffers, यार? Come on, यार। यार इथरनेट तो है, नहीं कर रहा। मेरे में क्यों दिखाता है इतना फिर ये बफर भाई, जब तुम लोगों के में नहीं कर रहा है? मेरे में क्यों दिखाता है इतना? अनोय लगता है भाई, बहुत दिमाग खराब। यू आर इंडियन नॉट जर्मनी, ये तो पता है भाई। कुछ नया बताओ। मैं भाई स्क्रीन की क्वालिटी लो कर देता फ़ोन पे। ये वाईफाई की वजह से हो रहा है। ये वाईफाई मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा ना फ़ोन पे, अच्छे से कैच नहीं कर रहा होगा इसलिए कर रहा। तुम लोगों को तो क्या है कि तुम लोग को सिर्फ स्ट्रीम का, तुम लोगों का इतना नेट नहीं जा रहा, मेरा जा रहा है इसलिए। आई गॉट इट नाउ।
ध्रुव राठी फैन ऐसी एयरटेल ना हो जियो। एक्चुअली भाई फोन पे मेरा TSI इथरनेट से कनेक्टेड है तो स्ट्रीम अच्छे से होती है, बट मेरा फोन वाईफाई से ही कनेक्टेड है ना। वाईफाई कभी कभार कैच नहीं करता है इधर, तो फोन में बफरिंग दिखाने लगता है, तो कई बार मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रीम बफर हो रही है, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। Trap. I feel quite hungry. का खाना खा लेता हूँ। हु इज ही GIF? इट्स योर बफर नाउ, लेस देन अ सेकंड के लिए हो रही बस, अगेन फॉर 6 सेकंड। आई एम श्योर कि आज स्ट्रीमिंग में ही दिक्कत है। अगर तुम लोग कह रहे हो बफर हो रहा है तुम्हारे में, इट्स ironic cause the Iceman was the nice man, now I'm hot and cold. Save. I'm gone. Nice try, you whore son! Attack! Come and help us! Jesus! I'm hit!
आई एम गॉन। आज म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ओके आई एम गोइंग नाउ। आई एम गोइंग टू माई वाइफ नाउ शी कॉल मी गुड बॉय शी प्रॉमिस्ड। अरे क्या लिख रहे हो भाई? ये जर्मन लिख रहे हो ना? मैं तुम्हारी चैट बीच में म्यूट हो गया था क्योंकि भाई मेरे घर में थोड़ा क्या बोलते गेस्ट आए हुए हैं ना, मेरी बुआ जी आई हैं तो वो मेरे से बात करने लगी इसलिए म्यूट हो गया। बीच में म्यूट हो जाता तो समझ जाना कि कोई कमरे में आ गया बातें कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है? इसलिए मैं बीच में म्यूट हो जाता हूँ कई कभार। मेरा कमरा क्या है, इंटरकनेक्टेड है तो लोग इधर आते जाते रहते हैं। ओके भाई लेट्स। This is definitely evidence. This is definitely evidence. बहुत बफर हो रहा है यार, शिट। You value your life? Kurva, enough! I'll teach you, you fucker! Who were these bandits? Could they be the ones I'm looking for? I should look around their camp. This is definitely evidence. सेव मार देता। पता नहीं बफर हो रहा है कि नहीं, मेरे में ही आज नेट प्रॉब्लम है फ़ोन पे, कैच नहीं कर रहा है फॉर सम रीज़न, एनी रीज़न इट कुड बी।
Whoa! Good afternoon. I found those poachers, like you asked me to. Poachers? More than one? Yeah. A whole band of them. And not just poachers. How do you figure? From the way they were armed to the teeth. Their camp is a little to the south of the pond. It's full of loot. Somewhere by the rocks? But that's damn close. Got any proof they're there? I found this on them. Typical. The fuckers know what they're doing. This lot weren't willing to listen to reason. So I dealt with them. They won't be doing any more poaching. Blimey. You took them on all by yourself. Well, you saved me having to persuade Bailiff Thrush to send the Troskovitz garrison after them. Are you gonna finally tell me about the ghost? Aye, I will. I need you to catch him. This ghost fella is a poacher too. But he ain't like any other poacher we've had, I can tell you. What else can you tell me about him? Why do you think he's different than the other poachers? He's one big mystery, that bastard. He's a damn good hunter. Every shot hits the mark. A real archery master. On the other hand, he leaves a right mess. And the way he guts the animals is shoddy. I ain't sure if he does it on purpose or he's just sloppy. Sounds like he could be a huntsman out for revenge. Nobody's taking revenge on me, that's for sure. But I don't know if Vostatek cursed anyone during a moment of weakness. But it's true, there's a lot that suggests this ghost ain't local. Do you want me to send him to the gallows? Exactly. If he ain't already wolf food or ain't armed to the teeth. Where should I look for him? That bastard is poaching between my patch and Vostatek's. He knows it's the least patrolled area, since we don't quite know which one of us is responsible for it. You just need to head north a bit from Trotsky Castle. To the north of the castle? Any idea where I should start? You can start at the crossroads, northeast of the castle. Search the rocks there. Like I says, us huntsmen don't go there much, so we don't know the area. I'll get on it then. I can't wait to see how this turns out. Aye, aye, you silly doggy.
Whoa! A nice instrument. Maybe I should learn to play it and become a wandering minstrel. स्टीव, ये बहुत बफर हो रहा है मैन, बहुत बफर हो रहा है। एनोइंग लेवल का बफर है ये, बहुत एनोय करेगा ये। तो चैट में मेरे को लगता है लोग चले भी इसीलिए गए क्योंकि बफर कर रहा था बहुत। तो भाई इतनी बफर करेगी स्ट्रीम को क्यों देखेगा जब फिर आके? व्हाई वुड समवन वॉच व्हेन इट्स बफरिंग दैट मच? व्हाई वुड समवन वॉच द स्ट्रीम इवन? गेम खेलने में मजा तो बहुत आ रहा है डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट शिट। कोई नहीं। What's going on? Do you have any coin to spare? Tell me, how come you're begging? What happened to you? Allow me to disabuse you of your misconception. I am no beggar. I simply find myself in a bind compelling me to rely on the kindness of good people. So, you're begging? But I'm not a beggar. Why are you asking for charity? Fancy an ale, eh? The amount you're looking for, it sounds like you plan on downing a whole keg. That wouldn't go amiss, but really, I need the coin so I can travel to Vlashi. That's quite a way. I've always found it to be a day or two's ride. But I don't see any horse. I don't have one. That is true. I'll join a caravan, ride along, pay for my way, my provisions and such. Begging, but not a beggar, and he needs money to get to Vlashin.
Oh, I've come across a fair few beggars before, but none have ever said that to me. Must be a coincidence? Look, you can tell me what's going on here. I can't. You're prying way too much as it is. And you're surprised? I run into beggars, but never any like yourself. Something's obviously fishy here. Well, I'm sorry to disappoint you. I simply want to reach Vlashim. You know, see a bit of the world and that. Look, no more games. I've told you. I can spare you a few coins. It's a lot more than I normally give, I have to say. Thank you so much. May the Lord repay your kindness. Farewell. May you travel safely. Yes. Thank you. हेलो भाई, कैसे हो? हेलो सी गेमिंग, क्या हाल है? मैं बढ़िया, आप बताओ। There's something I need to talk to you about. Sure thing, but not without beer at the tavern of our hearts. There's something I need to talk to you about. Of course, but only with tankards in our hands and song on our lips. We'll meet at the tavern. ठीक हो, आप बताओ। और कल कैसा चल रहा है स्ट्रीम? एकदम बढ़िया भाई, एकदम सब सही चल रहा है, एकदम मस्त, एकदम की एकदम फन। ये कौन सा है? एक केसीडी 2 है। मैंने इस साल वो खेला था ना 1 केसीडी 1, लंबा गेम जो था, उसका सीक्वल है, सेकंड पार्ट। ये तो भाई बहुत तगड़ा गेम है। इन लोगों ने काफी कुछ इम्प्रूव किया है पहले गेम से, ये मैं देख के बता सकता। ओके, यस। 007 फर्स्ट लाइट खत्म, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक शुरू। अरे भाई नाइस। कैसी लगी 007 गेम? कैज़म कैसी लगी ओवरऑल गेम? OMG भाई, 007 तो बहुत बवाल गेम है। आई लव्ड एवरी सेकंड ऑफ इट। हो, आपने भी देखा क्या 007 का गेम प्ले क्या होता है? सी गेमिंग। बहुत सही गेम है यार वो। मेरे को पसंद आया कि ऐसी गेम इतने टाइम बाद आई मार्केट में। तो मार्केट में, क्योंकि भाई ऐसी गेम्स आती ही नहीं आज के टाइम इतना। रिव्यू बना दूंगा परसों तक उसका, बट अच्छी थी और कुछ जगह पीक थी, बट मजा आया। पूरे टाइम स्टोरी प्रेडिक्टेबल थी, लेकिन मेरे को थोड़ी प्रेडिक्टेबल कमी लगी भाई। हाँ मतलब एंड में थी काफ़ी प्रेडिक्टेबल,
बट बीच का प्लॉट ट्विस्ट था तगड़ा। हाँ, जेम्स बॉन्ड की मूवीज की तरह था भाई गेम, मूवीज से अलग नहीं था। नहीं यार, ग्राफिक्स और मैप और डिटेलिंग बोल रहा हूँ। नहीं ग्राफिक्स, अच्छा उसको बोल रहे थे। ओके ओके, हाँ वो तो है ही तगड़ी भाई। मतलब काफी ग्राफिक्स भी काफी, मतलब कैसे ट्रू टू लाइफ दिख रहे हैं, रियलिस्टिक ग्राफिक्स है काफी। PS3 जनरेशन जैसी थी बेस्ट वे में। हाँ कह सकते हो भाई, मेरे को बहुत PS3 जेन के गेम्स के याद आई उसे खेल के। मतलब मैं आज के टाइम में पूरा मार्केट RPG ओपन वर्ल्ड सोल्स लाइक इन सब ने ही कैप्चर कर लिया है भाई आज का पूरा मार्केट। फाइनली उससे हट के कुछ मिला, एंड आई एम ग्लैड मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे गेम्स ही आ रहे हैं ज़्यादातर ओपन वर्ल्ड लीनियर गेम्स की बहुत कमी हो गई है वैसे टाइप के, जो डिसेंट मतलब जिनका डिसेंट भी नहीं, बहुत अच्छा एक्शन था भाई उस गेम का। प्रॉपर एक्शन पैक्ड गेम है भाई। वो लात मार के गन कैसे ऊपर हाथ में उठाता है, गोली चलाता है। ब्रो हैव यू ट्राइड द $2 गेम विच रिसेंटली रचित्रो हैज ट्राइड? कौन सी गेम है रचित्रो ने जो खेली? Easy, good horse. कौन सी गेम, नाम बताना जरा एक बार। वैसा गेस मैंने खेली नहीं होगी, आई एम श्योर अबाउट दैट, मैंने खेली नहीं होगी। क्या बफर कर रही है स्ट्रीम मेरे में बहुत। से मार लेता जस्ट इन केस भाई, बाद में पता चला दिक्कत आई। भाई फिर गए सब भाई, बफर ही हो रही थी इसीलिए चले गए। यार अब क्या करूं मैं नेट का भी। बहुत बफर हो रहा है, फक यार, मत कर यार इतना बफर, एनॉय होता है, बहुत एनॉइंग लगता है भाई इतना बफर। या कोई बता भी नहीं रहा चैट में बफरिंग है कि नहीं सही में। थोड़ा तुम लोग बता दो यार अगर बफर हो रहा है तो तुम्हारे में। मेरे को है क्योंकि पता नहीं चलता है, कई बार मेरे में दिखाता है जबरदस्ती का, बट हो नहीं रहा होता है। कभी बता दिया करो मुझे भी।
भाई मैं नहीं खेल रहा जब तक ये बफरिंग नहीं रुकेगी। भाई कभी बार्डर्स ग्रीव भाई कभी बार्डर्स गेट 3 खेलने का सोचा है? नील भाई मेरा टू बी ऑनेस्ट नहीं है इतना भाई, बहुत बड़ी गेम है यार वो। आई मीन 300 घंटे की है कुछ वो, एंड मेरे टाइप की नहीं है भाई, उसका गेम प्ले बिल्कुल मेरे को नहीं जचता। लेकिन केसीडी वगैरह तो फिर भी मेरे टाइप की है भाई, इसका गेम प्ले जचता है मेरे को ओपन वर्ल्ड। बफर का मतलब एक और बफर मतलब वो जो स्क्रीन पे गोल गोल घूमता है ना, वो स्क्रीन के बीच में गोल गोल घूमता है, तुम वीडियो नहीं चल रही होती वो। तुम लोग के में वो दिक्कत आ रही है क्या मेरे स्ट्रीम में? क्योंकि मेरे स्क्रीन पे दिखा रहा है बार बार फोन पे 70-80 आवर्स की। अरे भाई मैं 70-80 आवर्स थोड़ी थोड़ी खेलूंगा वो गेम भाई। मैं आपको तो पता है मैं ढंग जिन गेम्स को लंबा टाइम देना होता है उन्हें मैं लंबा ही टाइम देता। फिर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, थैंक यू भाई। लोग ऐसा बोलते हैं। अरे वो 70-80 आवर रज्ड प्ले थ्रू है भाई, अगर तुम प्रॉपर खेलोगे ना अपना टाइम लेके तो वो बहुत टाइम देने वाली गेम है। 200-300 तो ले ही लेगा। एक क्रिम्सन को भी तुम रश करके बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते। आप एक प्ले थ्रू में गेम को एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। अब मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि हर प्ले थ्रू में एक अलग ही स्टोरी चलती है वैसे। डिड यू चेक द लिंक? कौन सी लिंक? आपने कौन सी लिंक भेजी? कौन सी लिंक? डीएम करना मेरे डिस्कॉर्ड पे यहाँ, क्योंकि नहीं आएगा। 100+ आवर फॉर सिंगल प्ले थ्रू। यप, हाँ तो वो अंडरस्टैंडेबल है वो कि सब सब मतलब सारे एंडिंग नहीं ले, मतलब वो स्टोरी एकदम चेंज हो जाती है, वो मैं समझ गया। बट मेरा प्लान नहीं है फिर भी बाल्डर्स गेट। आई डोंट थिंक इट्स माय टाइप ऑफ गेम। Even if you do same choice for second playthrough, still your game will be different because the slightest in your game will make a new seal. ओह अब समझा मैं। मतलब गेम में रिप्लेबिलिटी भी बहुत दे रखी है, हर प्ले थ्रू एक न्यू एक्सपीरियंस है अपने में। नाउ दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स एक्चुअली गुड थिंग। आप ऐसे खेल रहे हो क्या अभी बाल्डर्स गेट? मतलब आपने भी सुना ही है अभी तक? इट हैज 17,000। व्हाट द हेल मैन, डेवलपर्स ने अपना पूरा टाइम दे दिया लग रहा। दे गेव देयर मनी टू एट एवरीथिंग। सही में भाई 17-18 एंडिंग है अगर तो। लेने की सोच रहा हूँ नेक्स्ट सेल पे, अगर माने बहुत तो ले लेना, क्योंकि टाइम वाइज तो वर्थ इट गेम है वो। बाकी वही गेम प्ले देख के लेना, क्योंकि वो हर किसी के टाइप की गेम नहीं है, इतना तो है। हर गेमर को अपील नहीं करेगी वो। पर मेरे में तो पता नहीं क्यों इतना बफर कर रहा है, डोंट नो। रियल एंडिंग आई थिंक 14-15 है, बाकी 17 के। रियल फेक का क्या ही करना भाई, जो जो मिल जाए उस पर खुश रहो भाई। मतलब कोई भी यूट्यूबर सारी एंडिंग नहीं ले पाया होगा अपने प्ले थ्रू में। बिकॉज देयर इज नो वे कि कोई बंदा पूरी लाइफ टाइम में 17,000 एंडिंग ले पाए। भाई उन्होंने बना कैसे ली, मैं तो ये सोच रहा हूँ। लेना बात की बात, हाउ डिड दे मैनेज टू मेक इट? आई थिंक टर्न बेस्ड कॉम्बैट है बाल्डर्स गेट 3 का, कभी ट्राई नहीं किया। हाँ मैंने सुना शायद कुछ टर्न बेस्ड सीन है उसका, बट वैसा नहीं है कि जैसा एक्सपीडिशन या परसोना का होता है, उससे अलग है कुछ आई गेस। आई थिंक वो गेम का
इंजन खुद बना देता है एंडिंग। देव ने नहीं बनाई है सर 3। मतलब इंजन ने खुद से कैसे बना दी, मैं नहीं समझा। This is a poacher's lair, for sure. So where's the poacher? अरे Sir Hans, I'm here hunting poachers, and I come across you. Henry! I never expected you here. I was sent here by the Nebakov gamekeeper. देखो भेज दिया, अभी चेक करता मैं स्ट्रीम के बाद। हाँ बट हाँ, द गेम हैज बेस्ट स्टोरी, कॉम्बैट, कैरेक्टर्स, रिप्लेबिलिटी। ओके। अरे ये सर हैंस क्या कर रहा है यहाँ? You said there are poachers here, and I don't have to be King Solomon to figure out who the poacher is, do I? Jesus. You couldn't choose something different? There's all sorts of ways to make money. Now hold your horses. How else are we supposed to get some coin quickly so we don't have to go around looking like beggars? By honest work? This is very risky. Look, no one found me here until you turned up. And you're only here because you're doing some terribly noble deed again and helping out old grannies in distress. And Okay, bye bro, have a good night. Okay brother, bye, thank you for joining. There are plenty of ways you could earn money. Why poaching of all things? I've always been good at hunting. Remember how we went hunting together the first time? I really showed you up, didn't I? As I recall, it was the other way around. What rot! I'll make a pile of coins selling this game. And then, that idiot on the gate will finally believe we're not beggars. He'll... be laughing on the other side of his face when we turn up in our finery. And it's a much better way than your idiotic idea with the forge. And what are you doing with the game you hunt? Thanks to my bargaining skills, I've got to deal with an excellent trader in Troskowitz. रुको थोड़ा, मेरी आवाज दब गई ईयरफोन की। बाप रे कितना बफर हो रहा है, बस कर बस कर। बहुत बफर कर रहा है अभी भी। मैं तुम लोगों के में नहीं दिखा रहा, मेरे में दिखा रहा है। मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। अच्छा तुम लोगों के में नहीं हो रहा, एटलीस्ट तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। लगता है नेटवर्क स्टेबल नहीं होगा। आपके में भी बफर कर रहा है क्या? मतलब स्वरूप भाई आपके में बफर कर रहा है कि सिर्फ मेरे में ही कर रहा है? मतलब आपके में कर रहा है तो बताना, ठीक है? अगर आपके में नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सिर्फ मेरे में ही गलत दिखा रहा है। क्योंकि मैं अभी ऊपर जितने व्यूअर्स थे उन्होंने तो यही कहा कि उनके में बफर नहीं हो रहा। अभी मैं इसलिए फिर से मैं पूछ ले रहा। मैं अभी थोड़ा ईयरफोन वो कर रहा, क्या बोलते हैं, एडजस्ट कर रहा। मेरी थोड़ा आवाज कट गई है। ओके हाँ हाँ कंटिन्यू करो, उसके बाद बोलूंगा। ओके मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ ना, ईयरफोन मेरी दब गई है आवाज ईयरफोन की थोड़ी। And you realize that this trader of yours could snitch on you if he's in a corner? Or just for the reward? My trader is reliable. Maybe, but someone might see you together. That's not going to happen. We're careful.
The gamekeeper wants to get rid of poachers around here, and I promised to help him do it. Well, that's awkward for you, isn't it? Any idea what you're going to tell him? Well, have you? Surely you don't expect me to tell him I didn't find anyone? Why the hell not? You just found some abandoned camp, no? It's a stroke of luck that he sent you, eh? You have to stop doing it. We can't risk you getting found out. Maybe just by chance. And have you any better idea of how we get to the castle? Eh? Look at the state of yourself. No matter how you dress up, you still have straw sticking out of your boots. With my बफरिंग तो नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है। थैंक यू भाई बताने के लिए, मतलब सही चल रहा है एकदम। थैंक यू ब्रदर। And what am I supposed to tell the gamekeeper now? I don't know. Make something up. Maybe you found the poacher and he didn't want to surrender. He attacked you and you beat him, and that's that. You have to cooperate at least a bit, though. If I found you, then so can anyone else. Like people from the castle. Welcome भाई, अरे बिल्कुल भाई। Making a fuss about nothing. It was purely by chance that you found me. I'll cover all my tracks, clear the path, and I'll be very careful from now on. Just relax, no one will find me. I'll see to that. It's not enough. How are you going to hide a camp in the middle of the woods? I already told you what I'll do so that they don't find me. If it's not enough for you, bugger off. Oh, and the gamekeeper will want to see some proof that I found the poacher and dealt with him. Got anything? I could give you my equipment. It'd be pretty hard to survive without it, but... To poach without it? Yeah, that's settled then. All right. You silly mutt. ये हैंड्स भाई पोचिंग वोचिंग करने बैठ गई है। If you want people to respect you, you should behave decently. अबे भाई तू मेरा दोस्त है। Damn it, what are you doing? थोड़ा पेट भर रहा हूँ। So the pillory appeals to you, does it? Yes. What are you playing at, Henry? अरे भाई तू दोस्त है मेरा, थोड़ी बकैती भी नहीं कर सकता। मेरे को हाउ टू एक्सेस हॉर्स इन्वेंटरी मेरे को चेक करना है। अच्छा हाँ ये है ना। हाँ। ठीक है सरहन।
भाई कितना बढ़िया था, सरेंस से मिलना अनएक्सपेक्टेड था। Greetings. Do you need something? You don't have to worry about the last poacher either anymore. But it was one hell of a job, I can tell you. Really? Go on. Where was he? North of Trotsky. He had a small camp there. Below a cliff. Just like you said. I'm sure he realized there wasn't any point resisting. What did you do with him? Well, it's like this. I did find that poacher, actually. What did you do with him? Nothing. He's a friend of mine, you see. What? He's a nobleman from Ratai. Hans Capon. I'm in his service, in fact. Are you yanking my pizzle? Can you just answer the question instead of making up stories? I found the camp, but there wasn't any poacher there. Or in the surrounding area. It seems he got wind we were after him and cleared off. I only found this gear he left there. I don't think he'd have left it there if he wanted to carry on somewhere else. What's that? He used it to make traps, if you ask me. And there are some tongs as well. Probably for pulling out teeth and that. It really does look like he packed it in. It wasn't that hard then. Good work. अबे सच का ऑप्शन ही नहीं देना था अगर वो बताने नहीं दे रहे. That's a generous reward. We don't have any more poachers. So take it as a parting gift from us huntsmen. It'll be a long time before any more of the arseholes turn up in the Trotsky forests. You sent out a clear signal what they can expect. Well, you can take a look at my bows if you want, and in return for your help, I'll take a bit off the usual price. Don't use it for poaching, though. That's not a bad idea, you know. Don't even think about it. No, of course not. Thanks. I'll tell Vostatek to do the same. But just between you and me. मेरा टाइम हो गया है, मेडिसिन खा के सोने जा रहा हूँ. ओके भाई, गुड नाइट भाई, थैंक यू फॉर जॉइनिंग भाई. You have a good sleep. भाई को एआई बोल दिया. अरे वो हो जाता है कभी कभी लिखने में, कोई दिक्कत नहीं. गुड नाइट ब्रदर. टैपिंग एरर. अरे होता है कोई दिक्कत नहीं. Good night, good night. I hear the Hands spend their free time beating the shit out of each other. Can I have a go? The miller sent you, eh? मिलते हैं फिर से कल लाइव में. तब तक के लिए बढ़िया बढ़िया रहें, खुश रहें. यस यस भाई, गुड नाइट. आप भी खुश रहें.
Did he explain how it works? And how do these fights work? Nothing to it. You put aside your weapons and armor, challenge one of us, and hop in the pen. And from there on, it's pretty clear, I suppose. And who takes part in these bouts? Well, the first is of course me. If you manage to beat me, you can try Malik. He ain't as fast as me, but he's got a stronger punch. And if Malik ain't tough enough for you, there's always Vera. He'd tear you to shreds. Would you mind explaining the rules once again? You put down your gear, challenge, you get it now? Don't worry. I know all I need to. We'll see about that. The miller said I could wrestle with you. You look like something a boar chewed up and shat out. Are you sure it's a good idea? It's nothing. Let's fight. You do have the coin for a wager, don't you? Wait. You never said anything about a wager. Did you really think we brawl just to pass the time? Well, maybe we do a bit. But still, if you want to fight, you have to wager something. If you say so. Here's the coin. Great. Get your ass ready for a good kicking. Fucking hell! Fucking hell! Even my Nan fights better than you, and she's dead. Oh. Nice. Nice. You fight better than I'd have expected. I always do, man. Thanks. But we'll see how you fare against Malik. Oh, yeah. And this is yours. Safe. Now me. Praise God. Now it's my turn. Why did you start with all this brawling? Just look around. The mill's in the arsehole of nowhere, miles to the tavern and the wenches. Not a damn thing to do here but work. So you rather let yourself get beaten up? Well, I'm usually the one does the beating, see? Well, ready to brawl? Aye, all right. It's going to be a clean fight, see? No funny stuff. What funny stuff? Kicks in the balls, fingers in the nose, biting, and shit like that. Try something like that, and I'll rip your head off. Don't you worry. I can hammer you without any of that. We'll see about that. And what about the wager? Have you got coin? Here it is. That's the way I like it. Let's do this. There you go. Come closer. Come closer. You all right? Well, a bit of liquor to ease the pain, a bit for the tummy, and I'll be all right. You're gonna be much worse off when Vera's done with you. If you wanted to train a bit before then, let me know. I can show you some tricks. And here's your wager. Spend it well. Now it's my turn. अरे वीरा को भी मार दूंगा, सबको मार दूंगा भाई, मैं खतरनाक हूँ. What are you waiting for? Greetings, come in.
Greetings. I'd like to learn something. What do you want to know? Show me a few wrestling holds. Fine. But it'll take some time. Oh, you pooch. So you're the toughest one here? Aye, that's me. Still, it's odd that the miller trains you like that. Don't you think? I just do what I'm told. You'd rather keep things to yourself, eh? I suppose. I want to fight you. Are you sure? I could break you in half. Don't you worry about me. Well, shall we? Well, if you say so. Got the coin for a wager? Yeah. Here's the coin. Get ready then. ये तुम्हारा बेस्ट था. Fuck me. A stripling like you, and you whip my ass. You're full of surprises yourself. Not even Pa swore as much when he whacked his knee with his blacksmith's hammer. Oh, I know. Once a fight starts, my mouth takes on a life of its own. Here's the coin you won, and go and see Grazel. He could send you to Shelly-off instead of me. Whoa. Well, Miller, seems I defeated all the hands you have here. Even Vera? Well, hats off to you then. Listen, what if I sent you to Shelly-off instead of him? You up to it? Sure. Why not?
Great. I'll pay the entry fee and wager a pile on you. So you better win. And if you want to train a bit more, just punch the shit out of them sissies of mine. Take care. Okay. Go! Quick! Their shafts are damp and wealthy. I've got that loot for you. Incredible! Magnificent! Fascinating. You really got it. Give me that lovely thing so I can fondle her. Such a noble instrument is just begging to celebrate art and life. It's like it's saying, hey, with me in your hands, you'll be able to grab any wench you want. How can you take such a fine thing and abuse it for vulgar gain? Abuse? No, friend. Put to good use. Come on, play me something, will you? Give me a moment. I just have to hold it like this, and... What's that you up there? Hey, let me see. How the hell do you... hold it? Ah. Oh, Anna has tiny tits, like a pair of cherry pits. Uh-oh. Christ, no! The idiot broke the strings! What are you doing, you idiot? Do you know what I had to do to get that loot? I'm sorry, but... mate, I'll best be off now, eh? Fuck! Shit! You fucking whoreson! Your ma should have dumped you on the manure heap the moment you were born. What's gonna happen with that loot? Use it for firewood. It'll burn nicely with that lacquer. What? Henry, sick him! I mean, give him what for? Hey, why don't we all just simmer down? After all, it was an accident. Yeah. Of course it was an accident. Then I was just... I wanted to give it a stroke. There you go. Now apologise nicely and clear off. Alright, alright. I'm sorry. Sorry. Forget me. Forgive me. Forget it. Now what are we supposed to do? Without strings, it's just firewood, you know? Our dreams are shattered. The rose-tinted skies of glory are obscured by dark clouds. We'll be toiling in filth till we breathe our last. Farewell to Kuttenberg. Farewell to you lovely city damsels. We could replace those strings with new ones, couldn't we? Look, old pal. Henry himself is offering to lend a hand. The hunter Vostatek told me once that he made some strings for someone. He can make some for us. Vostatek? I know him. In fact, he owes me. Really? Damn. Too bad he doesn't owe us.
Who knows what you'll charge me and Michael for the strings? Sometimes the price is just too high to pay. Especially when you ain't got a grosh into your name. All right. I'll go and see what he says. All praise and glory to you. May you and all your kin be honored for 7 generations for all you have done for us unfortunate artists. You're not seeing this. God bless. So much dust. God bless you. What do you need? What do you have for... Let's talk about the price. All right. Why not? Do we have a deal? You must be from a poor region. Finally, a reasonable sum. Thanks. And have a nice day, friend. About what I expect. You? God grant you help. Wait, Goodman, I have something for you. How are you? And what do you need? You'll see, you'll see. Come here, let's talk. Now listen here. I have decided to sell an apple, and you have decided to buy it. You got that? How much? For you, next to nothing. I'm not paying that much for a plain old apple. God, you're a blockhead. So let's forget the fucking trade, shall we? Fuck you, whoreson! Show your stuff. You wanna try me? You swine! You pay for that! Take that fucker out, damn it! Show your stuff!
God bless. God be with you. I'm sorry. Greetings! Teaves Bachtalo, Romea. That girl was always fun to be around. But honestly, I don't blame her. Me neither. You don't look too good. Greetings to you two. You should see the Sobos. We'll see how things will be now. God be with you. I'm sorry. Not now. I'm full. Greetings to You don't two. look too good. Katarsal. What's You up? should see the Sobos. Jungoshita. God. My friend. Alachim shalom. It happens. Right. Just walk there if you're going. Good day to you. God bless. Tamiste son valikera. Sholem. Namistes, then, namistes. Careful. Teaves Bachtalo, Romea. They're not coming back. Question someone going to get back. Careful! Salmore! Santukejan. Mistes, valikera. Shoo! Get out of my sight! You shouldn't be walking around without a light. Namistes, then, namistes. ओके भाई, मेरा एटलीस्ट मिल गया मुझे. God grant you health. Good day.
You're my doggy, eh? Was must have come. I'm trying to sleep here. What? Sick! Atarzan, what's up, Pooch? Look what I have for you. What do you think will happen next? I know. There's that other kid. But I don't think the boy will want to stay here for long. I think you are right. I have And already with you? packed things. In case we must be on our way. You never know. But maybe I'm wrong. We'll see. I'm going to miss Madam. Marika and Bones have left. They are not coming. Have a nice day, Henry. I'd like to learn a new comp. Certainly. What? I'd like. And what? Can we practice the technique? All right. Shall we begin? Sure. Here, so we don't hurt each other. Thanks. So what's it going to be this time? Same as last time. You have to practice. Remember that trick I showed you? Sure. Right slash, left slash, then right slash again. That's right. Or you can do it the other way around. Well, shall we get started? Let's begin. See? That's the way. Again. Now show me the technique I taught you. Wrong. Again. And this time from the right direction. Enough! You're attacking from the wrong direction. No. Focus on the direction you're supposed to attack from. You mixed up the directions. Again.
Wrong. Again. And this time from the right direction. Where are you attacking from? Try again. This was also a technique, but not the correct one. You mixed up the directions. Again. Wrong. Again. And this time from the right direction. No. Focus on the direction you're supposed to attack from. Enough! You're attacking from the wrong direction. Beautiful! Once more. Nice! But you use a different technique. You're good. You said yourself that practice makes perfect. What now? Let's try something else. Let's fight. Stop by when I'm over by the pen. What's that sound? I see you had some luck on your hunt. Well, that's none of your concern. Unless you're some damned gamekeeper. And if I were? Well, whoever the hell you are, it makes no difference. We're just doing our job. And for the king, in fact. I'm curious to know what a royal official is doing here, caked in mud, and with a dead hare to boot. Well, I don't think it's any of your business, lad. Unless the bailiff sent you, eh? I'm not from these parts. Just passing through. Huh. That's what I like to hear. Very good. You think I don't know what you are? You may be covered in grime, but judging by your clothes, you're no beggar. And if you're licensed to hunt game, it's obvious. Well, now I'm curious. What do you think me and Vashek are doing here? You're tax collectors. And you've been given a sound thrashing for your troubles, eh? Way off the mark. We earn a lot more for the king than some fucking coin grubbers. So look, no disrespect, but we'll each go our separate ways. And you'd be doing yourself a favor by forgetting you ever saw us here. I'd better be on my way, friends. Yeah, as you wish. Goodbye. Christ. What a day. That's it. You have a Quick! Whoa! Whoa!
trying to get strings for a loop. And I hear you know all about that. I do, but it ain't so straightforward. You have to sacrifice an animal for that. You mean an altar? Candles, mysterious chanting and stuff? Nah, nothing like that. You just have to get a sheep, find the thinnest cut, and weave strings from it. You can eat the rest. I don't know how to gut animals. Well, you're just gonna have to learn. Run along to the woods and bag a deer, or a few hares, eh? You won't get much of any use out of them at first, but after a bit of practice, you'll get there. And meanwhile, I'll clear half your forest of game. You'd have your work cut out, lad. But if you'd rather, you can always buy those guts from a butcher. Isn't there any other way? Look, lad, I told you what you wanted to know. I'll make... strings for you if you bring me the sheep gut. What did you say I need for the strings? Guts, you giblet. Kill a sheep, open it up, gut it. Easy as pie. बुचर ढूंढना पड़ेगा, शायद बुचर के पास शीप गट मिल जाए. Quick. Whoa, whoa. Good doggy. Good boy.
यार ये क्या हो गया यार ये And I was beginning to worry what that was. But it's just you. Snitching. Christ! Pardon me. Go! Okay. What are you doing here? You're... I'd like to do something about that price. Well, I suppose we can try. अरे यार ये ईयरफोन की आवाज चली जाती है
ये मादर चोद ईयरफोन है साला एक नंबर का। पता नहीं काहे बात का दब जाता है अपने आप, आवाज आती ही नहीं कान में फिर प्रॉपर एकदम। Right. Aye, you'll convince me with that price. Pleasure doing business. Take care. रंडी माता इस भोसड़ी वाले ईयरफोन की। गांडू साला चूतिया। अब देखो साला बंद हो जाता है। मार दो साले की जाके। गांडू साला ऐसे हरकत देता है। यार Quick! Whoa, whoa. God! I've got that sheep gut for you. I hope you killed the poor creature before you pulled it out of its rectum. Or did you chicken out and buy it somewhere? Not that I care. Wait here a while and I'll make... them strings for you. Okay.
wages at the Oh, bar. yes. Good Oh. day. I got those strings for you. Ah, how the hills shall ring out in gladness to their glorious sound. We'll fix the loot and head off for Kuttenberg, fame and fortune. All praise to you, friend. Right. I hope that's all you need. If only, Henry, old pal. It's just there's still one little fuck-up. Friend, we have a problem. The innkeeper doesn't want us to leave. Says Kuttenberg isn't the place for us. Can you imagine? He who never set foot outside his village wants to block 2 free souls in their path to fame. And fortune. And recognition. And under the skirts of town maidens. Beast. In short, dear friend, you must have a word with him. You're worldly wise. He's sure to listen more to you than to us. Hang on. How can the innkeeper keep you from going anywhere? Well, you know, he's incapable of grasping that the artistic soul needs to fly as free as a bird. Aye, he's an Ignoramus. Besides, we owe him a bit of coin. But why don't you pay him back then? That's just it. We'd love to. We had always scraped together a few groschen. But it's not coin he's after. He wants us to work off our debt. He lets you two drink on credit? How so? Because he's a damn crook. He knows we can't pay back our debt outright. But he counts every wretched sip we take and adds it to the burden we have to shoulder. Well, why don't you just up and run for it? And sully our honor? Never. And also, the innkeeper would tell the bailiff and he'd come looking for us. We don't want to end up in the stocks. Why do I have to be the one to solve it for you? Because we don't have time. We have to concentrate on composing our songs, creating art. Art! Believe me, friend, once we get to Kuttenberg and make a shitload of coin, we'll pay you back double. Tell you what, tenfold. I'll have a word with him, and we'll see what happens. Okay. That's the spirit. Let's drink to that! Good day. Good day. I hear Michael and George have run up a small debt with you. A small debt? They owe me a whole heap of work, my friend. A month ago, I told them to dig a hole for shit behind the barn, and I'm still waiting. There's a privy there, but now it's full. The shit has nowhere to go but downhill. It's flowing down to the bathhouse. The other day, they promised that if I poured them a drink, they'd haul sacks of chaff to the barn. They boozed for free all night and swathed down sausages till they were as greasy as a cart axle. But that chaff is still out in the damp and rain. So, haul some sacks and empty the latrine. And then the debt is paid? Aye, but I'll bet my boots that even if those two miraculously got off their asses, they'd still manage to rack up another debt in no time. What is it Michael and George have to do to pay off their debt? Haul sacks of chaff to the wagon and empty the overflowing latrines. Once that's done, we'll be quits.
Couldn't someone else do the work instead of Michael and George? They'd just do a shoddy job anyway. You know them. Well, they'd have to do it again then. I'm telling you. Until the chaff's undercover and the latrine's clean enough to eat out of, them two owe me. Forget about those two fools. You're not responsible for their upbringing. A decent pile of coin could smooth everything over, couldn't it? Look, my friend, have you even taken a look at that privy? The heap of coin you'd need couldn't be amassed even by the king himself. What is it Michael and George have to... Where did you say the lads who found the Water Goblin's treasure go swimming? Near the pier, on the Rock Tower Pond. I'm afraid I've got bad news. I found the lads, but they were dead. They drowned. Christ almighty. I told them they should have returned the treasure. Those poor lads. Such foolishness. Thanks anyway. I'll let the Troskovitz gravedigger know. He'll bury them. Or my oaths owed to A. Fellas, about those jobs you're supposed to do. We? But dear friend, we're artists. Why don't you do it yourselves? What? Surely you can't be serious. You expect artists to grab hold of a shovel? But that's going against nature. We have to compose new songs now. Being a poet is hard work, you know. Oh well, I suppose I'll have to do it myself. I knew you'd never leave us stuck. You won't be sorry. We'll pay you back in gold for every single turd. You. It happens. Just watch where you're going next time. Praise the Lord. Greetings. Interrupting my train of thought. Well aware of the silver. Good, Dougie. Good boy.
ठीक है। Jesus Christ, he prays. Afraid of water, are you? Ah, of course not. I was just heading to the baths. Damn. This is throwing my back out. From my neck to my arse. Ugh. This is... God grant you health. Good Lord, what did you roll around in? You're just in time. I just sharpened my scissors. I'm in need of your services, Master Barber.
I like how this turned out, and I hope you feel the same. Oh, good grief. What on earth are they eating to shit this out? I should have ditched those songsters ages ago. This must be the only... Christ, you stink to my heaven! What? The jobs have been done. Like you wanted. But I gather from the stench you did it all by yourself. And those two dolts didn't lift a finger again, did they? Fuck. How is that supposed to drum the idleness out of them? It won't. What can you do? Nothing. The job's done, so the debt is settled, I suppose. Michael and George can go to the devil for all I care. Thanks. I'm sure they'll be delighted. Sooner or later, someone will wring their necks anyway. Not everyone will be as soft on them as me. नल्ले हैं Square साले things दोनों. with the innkeeper. Your debt's been settled. Our savior. We knew you'd support our artistic souls and save our mortal bodies. May your name live in glory. Your glory shall be sealed by the song we wrote for you. Oh my god, what have you done? Fuck yeah. For... अरे यार चुद गया फिर. हाँ. You and about you, our hero. Definitely not going to sing those words, right? Which words? You know exactly I'm what just joking. Right, you ready? Can't tune the strings. You've got one job. Good? Right. When it seems you're out of luck, there's just one man who gives a fuck. A friend who'll never leave you stuck. Now who can that friend be? क्या गा रहे? अरे यार. Well, Ludyek? Henry, our hero Henry, the fellow who helps his fellow man. Henry, reliable Henry, he gets the job done the best he can. Oh, oh, oh. Watch out, here we go. Oh, oh. I can't hear you in the back. When you want to string your lute and trumpet with the back drum, who will pull a sheep gut out, cruel the creatures who wrecked home. Oh, Henry, we thank you, Henry, the fellow who helps his fellow man. His fellow man! Henry, let's drink to Henry, he gets the job done the best he can.
वाह So, how did you like it? Weren't we fantastic? I tell you, that loot really gave it a punch. I'd say we were incomparable. Chi la dura la vince. You can't keep a good man down. The world awaits us. Awaits us with open arms. It was quite interesting. Interesting? I mean, I never heard anything like it in my life. Ah, you want to say new? New and original? Yeah, that's it. Definitely original. Maybe a bit too much. Ha! I knew you'd like it. Dear Enrico, thank you for everything. It's time for us to shake the dust of this godforsaken place off our feet and seek our fortune in the big wide world. Kuttenberg, here we come! New life, here we come. Now, hold your horses, fellas. What about my reward for अब भाई everything इतना I've किया है done for थोड़ा you? रिवॉर्ड चाहिए We've already paid you back, my friend. Didn't you hear the ode we wrote about you? Look, that's all very nice. But what about some coin? Please, Henry, don't be so base. No gold in the world can match the luster of our velvet voices. Just wait till that song about you makes the rounds. You'll be so famous you'll have to fend off the women with a pitchfork. Besides, you've gained the most valuable thing in all the world. Friends. Farewell, friend. And thanks for everything. A large beer for me. It happens. Just which way you're... What's going on around here, innkeeper? Siegfried the herdsboy was here. He was complaining that wolves keep taking his sheep. By the way, we've put together this wee fight club here. Would you like to try it? That's why I'm here. The miller Crazel from Lower Semine sent me. Wonderful. He boasted he'd be sending a real tough fella this time, so I'm interested in seeing what you've got. And that's pretty much everything. Thanks, innkeeper. That sounds interesting. What's going on around here, innkeeper? We hold a fight club. That's why I'm here. Wonderful. And that's Thanks, innkeeper. I'd like to try the fights here. And did Crazel give you enough money? He did. Here it is. Excellent. Then the fights can begin. Or they could. But as I said, old Fiala is sitting at home in the doghouse. His old woman won't let him fight anymore. So you took my money for nothing? Easy, lad, easy. We'll sort something out. What if you tried to talk to Dorothy? You're a stranger. Maybe she won't be as sharp with you as she is with us. Go and see her. She manages the baths behind the inn. It's no more than 5 steps. All right, then. I'll see what I can do. कल करूंगा अभी ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग गुड नाइट